हेलो फ्रेंड्स, तो आज करने वाले हम कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओनली स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना है और अपने मॉडल का फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। फिर प्लस वाले आइकन पर टच करना है। फिर से हमको चले जाना है वेंटेज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आने के बाद 12 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर एडजस्ट पे जाएंगे और हमको सैचुरेशन को टच कर लेना है। फिर हमको इसको सैचुरेशन -100 कर लेंगे और स्टाइलिश ट्रेंड को कर लेना है हमको 39, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से टच करेंगे। वाइटनेस ट्रेंड को कर लेना है हमको 34, ठीक है। राइट कर लेंगे। करने के बाद हमको यहाँ ऊपर टच करना है और व्यू एडिट पर चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ व्यू एडिट पर सर्च करेंगे, टच करेंगे। फिर यहाँ पर रिजॉल्व ऑप्शन पर फिर साइड में यही भी होगा इन्वर्ट को टच कर लेंगे, ठीक है। और फिर जितना भी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पार्ट है बॉडी में सबको एडिट कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। इतना होने के बाद हमको करना है राइट, फिर एक बार बैक कर लेना है और फिर टूल्स वाले ऑप्शन पर टच करेंगे और हमको चले जाना है यहाँ पर डबल एक्सपोजर पे और यहाँ पर अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। ये PNG आपको मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर टच करना है एडजस्ट और इसको कर लेना है हमको ऐड कर, फिर कर लेना है राइट। फिर से यहाँ पर ऊपर वाले साइड पर टच करेंगे और एडिट पे जाएंगे और डबल एक्सपोजर पर टच करेंगे। एडिट वाला ऑप्शन पे जाएंगे, इन्वर्ट पे टच करेंगे। जितना भी बॉडी में एक्स्ट्रा पार्ट है सबको होने के बाद हमको करना है राइट। तो यहाँ तक होने के बाद एक बार बैक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा कर्वर्स का, यहाँ पर टच कर लेंगे और इस कलर वाले ऑप्शन पे रेड कर लेंगे, ठीक है। रेड में आपको कोई से भी कलर हो आप एक कलर कर सकते हैं। यहाँ ब्लू वाला ऑप्शन पे जाएंगे, हमको अपना कलर सेलेक्ट करना है जिससे हमें
टिक पे, ठीक है। और फिर हमको कर लेना है यहाँ पर राइट। फिर से चले जाएंगे, हमको चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आकर हमको कर लेना है ये टेक्सचर को हमको कर लेना है 6 और क्लैरिटी को कर लेना है हमको 4 और डैज और हमको फिटनेस को कर लेना है हमको -6। वेदर सब वही रहेंगे। और इतना होने के बाद डिटेल वाला ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर साइकिल को कर लेना है हमको 64 और रेडास को करेंगे हमको 1.80, ठीक है। रेडास को इतना भी नहीं प्लस माइनस कर देंगे और साइकिल को भी हम लोग माइनस कर देंगे। रेडास को हमको करना है 15, 16, साइकिल को कर लेना हमको 25 और डिटेल को हम लोग को रख लेना है 39, 15 रख लेते हैं और मास्किंग को हमको कर लेना है 29 और नोज डिपास को रिस्ट्रिक्शन को हमको कर लेना है 62, ठीक है। और डिटेल को हम लोग को रख लेना है इतना। और इतना होने के बाद हमको डिटेल को कर लेना है 16 हो गया। फिर हमको कर लेना है, यहाँ तक हमारा फ़ोटो रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर आपको कलर डिफरेंट लग रहा है तो आपको चले जाना कलर वाला ऑप्शन से और यहाँ पर इसको आपको ऐसे वैसे कर अपना कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। तो हमारा कलर ऐसे ही ठीक था, तो हमारा फ़ोटो बनकर तैयार हो चुका है। तो हमको कर लेना है यहाँ पर सिलेक्ट और हमको कर लेना है सेव डिवाइस, ठीक है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही।